Okay, जी, Assalamu alaikum. So we're starting off with inventory valuation. This is a question that is important for your examination. It says, who the trader financial year ends on 31st December should provide the following information about the inventory for the financial year ended 31st December 2014. Before we move on, you need to understand that inventory must always be valued at lower of inventory must be valued at lower of cost to net realizable value. Cost या तो कम हो या realizable value कम हो, तो जो भी वैल्यू कम होगी उससे हम इसको वैल्यू करें नोट ऑफ कॉस्ट और नेटलाइजिंग वैल्यू. So let's look at this. This is the first of January. This is the start of the year. At the start of the year, your inventory had cost you 6,800, but its net realizable value is 7,800. So I'm going to choose the lower of the two amounts. So I'm not going to take 7,100 into account. I'm going to take 6,800 into account. Let's look at the inventory at end because at end कैसे पता चलेगा 31st December given है. Now, at the end of the year, your inventory's net realizable value is lower than your cost. I'm going to cut out cost and I'm going to use net realizable value when I'm stating the value of inventory in my statement of financial position. So it says define the following terms. Cost is the amount of money you pay from your pocket to buy the inventory. Amount of money paid from the pocket to buy the inventory. From the business is cash कह लो या from the pocket कह लो. From business cash कह लो ज़्यादा बेहतर है. Business cash or bank to buy the inventory. Uh, Next is net realizable value. Net realizable value का formula याद कर लो. It's estimated selling price minus estimated selling cost or selling expenses. So it's estimated selling price minus estimated selling cost. इसको जब एग्जाम में लिखोगे तो प्रॉपर तरीके से लिखना. ठीक है जी. Next is explain why the inventory 31st will include inventory at 31st December was included financial statement net realizable value. तो ये वही आपको जो हमने ऊपर पॉइंट लिखवाया था ना, इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रिलाइजेबल वैल्यू. दैट्स अकाउंटिंग IAS International Accounting Standards 2 which says inventory must always be valued at lower of cost net realizable value. तो ये चीजें यहाँ लिखनी है. ठीक है जी. After the preparation of the income statement for the year ended, it was discovered that the inventory of 1st January has been included at net realizable value. If we talk about inventory at 1st January, net realizable value ज्यादा थी, cost कम. तो इससे फर्क क्या हुआ कि मेरी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई है. मुझे इन्वेंट्री को लोअर ऑफ द टू. यू कैन नॉट ओवरस्टेट योर एसेट. ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट कहता है यू कैन नॉट ओवरस्टेट योर एसेट. इन्वेंट्री was overvalued because it was included at net realizable value at the start of the year. So net realizable value is higher. इससे क्या होगा कि ये वो ओपनिंग इन्वेंट्री है, राइट. ओपनिंग इन्वेंट्री वाज ओवरवैल्यूड. अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरवैल्यूड है तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएंगी क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज ऐड करोगे तो ज्यादा अमाउंट आएगी. देन परचेज रिटर्न कैरेज इन ऐड करोगे, परचेज रिटर्न माइनस करोगे तब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे तब भी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी. कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी अंडरस्टेटेड है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सुकून से करना. यू डन दिस इन योर गाइड. इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा. Next is we move on to books of prime entry wala question. A question on either trade receivable or trade payable will be in your examination. It says Yang is a supplier, and it says the following transaction took place in March 2012. When purchased, uh, say when owed 3,000 to Yang, so you need to understand in this check करना हो Yang supplier विन कस्टमर है. कस्टमर को हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं. ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट का फॉर्मेट आपको गिवन है, राइट. ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. हम एक टी अकाउंट बनाते हैं जल्दी से. ट्रेड रिसीवेबल and the name of the trade receivable is win. Okay. So because trade receivable is a current asset, it has to have its balance in the debit side. At the start of the year, yeah, at the start of the month, 1st of March, Win owed how much? 3,000 to Yang. That's balance brought down on the debit side. The balance that he owed to us is $3,000. मतलब विन ने यांग को $3,000 देने थे. पुराने कोई गुड्स उन्होंने सेल किए होंगे. अब विन ने परचेज किया. इफ विन इज परचेजिंग देन यांग इज सेलिंग. यू आर हु इन दिस क्वेश्चन? यू आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ यांग. विन परचेज गुड्स फ्रॉम यांग विद लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस का मतलब अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ हुआ. ट्रेड डिस्काउंट नॉट येट डिडक्टेड, राइट. नॉट येट डिडक्टेड. इसको माइनस करना जरूरी है इस अमाउंट में से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, डिडक्ट भी होता है, बट रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होता. Yang allowed what percent? 20% of trade discount. So $1,000 से 20% would be $200. However, जब आप सेल्स रिकॉर्ड करते हो
तो वो डेबिट साइड पे होती है। पूछो क्यों? वो इसलिए कि सेल्स की वजह से आपका रिसीवेबल बढ़ जाता है। सो आई हैड टू रिसीव 3000 फ्रॉम हिम on the 1st of March, but I sold goods again to him and they're worth $1,000. That was the list price, so 20% minus किया, so credit sales are 800 only. Okay, that's after the discount. Discount calculate भी हुआ, deduct भी हुआ, but record कहीं हुआ. This is the 17th of March. Then March 20th, Win returned goods. So Win has purchased goods. So Win will be returning goods. Win के लिए परचेज रिटर्न, हमारे लिए सेल रिटर्न। सेल रिटर्न जब गुड वापस आ गए तो उसके पैसे तो हमने नहीं देने ना, वी ऑलरेडी, अब उसको पैसे तो विन पे नहीं करेगा, क्योंकि विन बोलेगा कि मैंने गुड तो रिटर्न कर दिए। दैट हैज टू बी ऑन द क्रेडिट साइड। दिस इज March 20th. Write down sales returns because you are acting as Yang and Yang is the supplier, right? Supplier ने सेल किया तो उसको गुड वापस मिल गए। And again, it is list price, इसमें से 20% डिस्काउंट माइनस करना है। 20% डिस्काउंट टू बी डिडक्टेड। Why? Because ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट भी होता है, डिडक्ट भी होता है, बट रिकॉर्ड कोई भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, राइट? तो 200 का 20% लोगे, दैट्स $40, एंड $40 आपने रिमूव करके $160 पे रिकॉर्डिंग कर दी। ओके, देन when inform Yang that he has ceased trading, मतलब आप बिजनेस का बंद हो रहा है, and was unable to pay his debt in full. Yang Win offered Yang $650 in full settlement, which Yang accepted. Yang ने बोला कि ठीक है, जो आपने पैसे दे लिए उसमें से कुछ दे सकते हैं आप। तो Win ने बोला yes, I can pay you $650 in full settlement. So before we get to the full settlement वाली अमाउंट, हम देखते हैं ये वो कितना करता है। 3000 से स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस 800 और गुड्स, यही हो गया 3800। 3800 में से $160 जिससे गुड्स रिटर्न कर दिए थे, उसके पैसे नहीं बनते, राइट? तो 3640। So he is not able to pay 3640. Out of 3640, he is only going to pay you $650. The rest of it, the rest to balance है, जो balance है, that has to be written down as an irrecoverable debt. Irrecoverable debt आता है क्रेडिट साइड पे, बिकॉज अब ये पैसे नहीं मिलने, आपको मिलने चाहिए थे बट नहीं मिलने। अब ये निकालने के लिए आई गेस इट इज गोइंग टू बी 2990। That's going to be your irrecoverable debts. That's on the credit side, and you get to know about all of this and on what date? It is at the end of the month, nearly the end of the month. Irrecoverable debts would be 2990, and the balance that you've received, that's a receipt, right? Receipt cash में है या बैंक में है, check कर लेना। आई गेस लिखा हुआ नहीं है, तो ये रिसीट लिख लो या बैंक लिख लो या कैश लिख लो, जो भी आपकी मर्जी। The amount is going to be 650. After this, the account will be settled. There will be no balances. Why? Because he was not able to pay whatever the amount he owed. इसने बोला कि बस अब जितना 650 पे कर सकता हूँ, हमने 650 माइनस करके 2990, इट्स टोटल लॉस पर। ये टोटल लॉस है हमारे लिए। इसकी जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी लिखवा रहा हूँ, आप याद रखोगे, ठीक है जी? 3800 on the debit side, 3800 on the credit side. Now it says, prepare the account of Win. We've done that. State the name of document that Yang would send to Win following the delivery of goods returned. जब Yang को गुड्स वापस मिले थे, तो Yang को साथ जब Win ने गुड्स वापस भेजे थे, तो उसने एक नोट लगाया, उसको हमने कहा डेबिट नोट। वही डेबिट नोट Yang ने सप्लायर ने रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद उन्होंने फौरन ही अप्रूव नहीं कर देना, वो ही विल चेक कि गुड्स की कंडीशन कैसी है, वो रिटर्न की कंडीशन में है भी नहीं है। उन्होंने ये जब ये कंफर्म कर लिया, yes the goods are in the condition of return, he will issue a note, he will keep the goods at his warehouse and he will issue a note called a credit note, right? So the document that will be issued would be a credit note. Next is state the name of the book of primacy used to write off the bad debt. Bad debt को हम एक जमाने में irrecoverable debt को bad debt कहते थे, now it is irrecoverable debt. Irrecoverable debts are recorded in the general journal. However, मैं एक काम आपको एक करता हूँ कि एक एंट्री लिखवा रहा हूँ, प्लीज इसको बहुत इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये फॉर योर एग्जामिनेशन। जर्नल एंट्री, जनरल जर्नल की एंट्री, इसमें आप जब इरिकवरेबल डेट्स राइट ऑफ कर रहे हो ना, तो आप इरिकवरेबल डेट डेबिट करते हो। वो इसलिए बिकॉज इट्स अ लॉस, द टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल लॉस हुआ है, ये आपको पैसे ये वापस नहीं मिलने। तो इरिकवरेबल डेट्स 2990 डेबिट, एंड whoever is the customer, say Win इस केस में कस्टमर था, Win ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, राइट? That's the journal entry. So you must remember this, okay? Thank you so much. I'll be uploading another video soon. Thank you.